slide, specific learning outcomes were well written, well done. Right. So, coming to the practical points of laser, so we apply laser most commonly for PRP and for macular edema. So, what are the settings for PRP? What are the different setting levels for doing pan-retinal photocoagulation? What is the size of the spot? various parameters Parameters. that tell us those parameters. क्या क्या कंसिडरेशन एनर्जी है एनर्जी की इंटेंसिटी होनी चाहिए Good, ये होना चाहिए good. और So the spot size varies with the lens you use. So what are the lenses which are used for PRP? Fundus contact lens, let's say a 3 mirror Zeiss gonio lens. So that is one option if you want to do PRP. The second option is pan fundoscope. So what is the difference between the two? With pan fundoscope, the spot size is doubled. ऐसे ही है. So while with Goldman 3 mirror, the spot size remains the same. So आपने 200 माइक्रोन का किया, so with 3 mirror lens, Goldman 3 mirror lens, the size on the fundus will remain the same, but with pan fundoscope it will be double. And what is the intensity level? How intense should be the burn? Uh, 50 microwatt, 100 microwatt, 200. What should be the power of the spot? See, we gradually increase the powers, and when a light burn is produced, which we can visualize, that is the power. Because the different fundus have different pigmentation, so the amount of laser energy required is different for different individuals. So we gradually increase the power, and when a light gray burn is achieved, that is the power which it's usually 300 to 400 milliwatt. Okay, and what about macular grid laser? What is the difference in the macular grid laser and PRP laser? Okay, in PRP, we apply the laser on the retina outside the temporal vascular arcades. We leave the macula. We leave the optic disc and the papillomacular bundle and apply on the rest of the retina. And the burns are one width apart. We apply one burn and with an interval of one laser burn we apply again. So and what is Pascal laser? Pattern in which you can apply 10 or 20 or 30 laser burns simultaneously. So it reduces the time for doing PRP. Now coming to macular grid, we apply a lower powered laser burns, usually 50 to 100 microwatt.
See, and about 100 laser burns are applied in the. Again, we try to avoid the fovea and the papillomacular bundle and apply within the vascular arcades. So the problem with the laser is that it destroys the tissues. It is just like an amputation. So if the leg is infected and there is danger that the patient will die, we amputate the leg. So in the macula, the ischemic macula is uh, treated with lasers so that the rest of the retina gets better supply. The spots which we apply, they are converted to dead tissue, right? So uh, what is the difference between what is the lens which is used for doing capsulotomy or iridectomy? Uh, we are more concerned with the practical aspects, that when if you do not use a contact lens, so what is the difference? When we do capsulotomy, we use a contact lens. What is the advantage of using a contact lens? आई फिक्स हो जाती है, ओके, सो टू कंट्रोल द आई मूवमेंट एक ये फायदा हो सकता है, और गुड, सो जो फोकस होता है वो ज़्यादा वेल डिफाइंड होता है, और जो कॉर्निया के लेवल पे जो लेज़र बीम होता है वो स्प्रेड होता है, और कैप्सूल के लेवल पे वो फोकस होता है. सो कॉर्नियल डैमेज इज लेस बट मैग्निफिकेशन ऑफ द फोकस इज मोर. अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस ना भी यूज़ करें तो आप कैप्सुलोटमी कर सकते हैं, लेकिन कॉर्निया को डैमेज ज़्यादा होगा और वहाँ पे मैग्निफिकेशन कम मिलेगी आपको. और आयरिडोटमी और आयरिडेक्टमी में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयरिडोटमी एंड आयरिडेक्टमी? और आयरिडेक्टमी में good. So when we surgically remove a piece of iris, this is called peripheral. आमतौर पर peripheral ही करते हैं, so peripheral iridectomy, PI do पे है. और लेजर आयरिडोटमी से आप उसमें होल करते हैं. You do not excise a portion of. And what is pupilloplasty? हाँ जी, एहसन साहब रोशनी डालें कोई प्यूपिलोप्लास्टी पे. नहीं, लेजर प्यूपिलोप्लास्टी. इसमें एक ये भी होता है कि प्यूपिल पे आप 2-3 शॉट्स लगाते हैं तो वो प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, इस किस्म का है. फिर आप पेरिफेरल आइरिडेक्टमी करते हैं, आयरस स्ट्रेच कर जाता है, वो इस किस्म की भी लॉजिक है. सो जब हमने करना होता है पेरिफेरल आइरिडेक्टमी तो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं. और कहाँ पे अप्लाई करते हैं ये लेज़र? ठीक है, सुपीरियरली करेंगे, लिड के नीचे आए. कौन सी कंडीशन है जिसमें इंफीरियर आइरिडेक्टमी करते हैं? सिलिकॉन ऑयल और
गैस यूज करें, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 ऊपर जाएगी ना, तो अगर आपने पेरिफेरल आयोडेक्टमी ऊपर की हुई है तो वो क्लॉग हो जाएगी। सो इंफीरियर आयोडेक्टमी के लिए, हाँ हाँ, वो भी कह सकते हैं। और ओके, What is the reverse side? But if instead of being at 6 o'clock, it's 4 o'clock. उसमें कोई जटिल है। so what are the side effects of pan-retinal photocoagulation? Complications of PRP. Good. So, okay, right. Pain, right. तो हेमरेज हो सकता है अगर आप ब्लड वेसल को अप्लाई करें। तो कहाँ पे PRP पहले करते हैं, ऊपर के नीचे? अगर ब्लीडिंग हो जाए तो ब्लड कहाँ जाएगा? तो पहले नीचे कर ले, फिर ऊपर कर ले। 2-3 सेशन लगा रहे हैं। आपने 4000 बर्न्स लगाने हैं तो आप 1500 2000 सेशन में लगा लें, फिर 2 और 3 सेशंस में आप कंप्लीट करें। और वेन एवर देर इज परसिस्टेंस ऑफ न्यू वेसल्स आप और लगाते हैं। सो न्यू वेसल्स जब तक रिग्रेस ना हो जाए उस वक्त तक आप लगाते रहते हैं। और हाँ जी, कुछ के बाद देखने के बाद आप उसका रिस्पॉन्स देखते हैं, तो व्हाट आर द इंडिकेटर्स कि आपको पता लगे कि PRP का लेजर इज इफेक्टिव। डिस्कलर हो जाता है, ठीक है, आफ्टर गुड सक्सेसफुल पहले दिन फोटोग्राफी करते क्यों, पर्पस क्या होता है, व्हाई डू डाइवर्ट करते हैं बेसिकली ऑक्सीजन में ब्लड सप्लाई डाइवर्ट करते हैं फ्रॉम द डिजीज टू अदर, ठीक है, वो जो पार्ट डिजीज है उसको आप लेजर के साथ वी आर डिस्ट्रॉइंग इट, डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है लेजर, वो एब्लेशन हो गया है, फोटो डिस्ट्रक्टिव, फोटो डिस्ट्रक्टिव को एब्लेशन प्रोसीजर।
नहीं बेनिफिट्स भी ज्यादा बहुत सारे ना 1,500 रुपये की तुम्हें लेजर लग रही है तुम इतने ज्यादा इंजेक्शन लगेगा कितने लगेंगे वो मतलब जो एक ऊपर को किसी पेशेंट आया हुआ अपनी यहाँ पे लगवाएगा नहीं लगवाएगा सेटिंग में जहाँ पेशेंट एक्सेस हो फ्री हेल्थ केयर वहाँ पे हो सकता है हमारी तरफ तो पीआर की बेसिकली आप वही करते हैं आप स्कीम में करता डील करते हैं ताकि जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसकी वो रिड्यूस करें क्योंकि जब ऑक्सीजन डिमांड की पूरी नहीं होगी तो क्या होगा न्यू वेसल्स बढ़ते रहेंगे बेसिकली यू वांट टू स्टॉप जो न्यू वेसलाइजेशन है वो जो प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी है उसको इसलिए ये पीआर की और ये रीजन ऑलरेडी आपको बता चुका है और पेट के बाहर बाहर पीआरपी के अंदर आपने बताया कि पेरिफेरल विजन की लॉस हो जाता है तो कोई ऐसी चीज है जो आप पेशेंट को पहले बताओगे बिफोर डूइंग पीआरपी एक प्रिकॉशन या एक आप उसको ये बताओगे कि एज कम्युनिकेशन यू विल हैव टू बी केयरफुल आपकी पीआरपी की ऐसी चीज पेरिफेरल विजन की लॉस हो रहा है एक प्रॉब्लम हो सकती है उसके बाद सर देखिए पेरिफेरल एरिया में ज़्यादा रॉड्स होते हैं तो देयर वुड बी एनीथिंग कि उनको नाइट विजन में थोड़ा सा वो नाइट विजन के बारे में आपने पेशेंट को करना है काउंसलिंग